फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, अंग्रेज पत्रकार ने पूछा क्या मोदी मुस्लिम विरोधी हैं और क्या वे हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। जयशंकर देखते हैं आंसर क्या देते हैं, मुझे तो वो सुनना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। India is the third largest Islamic population in the world, and the Asia Pacific is the largest Muslim population in the world. And like it or not, there is a very deep perception that whether it's Hindu nationalism or whatever, there's just a little too much on the books that puts Prime Minister Modi in a position of being not just nationalistic but anti-Muslim. So my question to you, without defending the premises or lack of validity of the premises, what do you see India's role is going to be going forward in dealing with the issues of Islam globally? Stephen Blank, you described many positive changes in India. One change many feel is more worrisome, and that is the erosion of the constitutional commitment to a secular state and the rise of a very politicized Hindu nationalism. Can you comment on this, please? Look, I don't agree with your analysis and the question which flows from it. I would put it differently. I think that what we have seen after 70 odd years of independence is actually the results of the democratization of India. And by that I mean that today political power, social power, to some degree economic power, has shifted out of the big cities, the more cosmopolitan cities, where people speak English, where they have a sort of a global comfort level, people like me with whom you'd be comfortable, and move to a different set of people who are much more comfortable speaking in their own languages, who have a sort of a cultural, I would say, a milieu in which would be far more rooted on the ground in many ways. So to my mind, the changes which have happened in India are actually the demonstrate the successes of of democracy and what it has meant in terms of the consequences on the ground. So I don't accept that secularism is under threat for a very simple reason. Look, at the end of the day, secularism was not promoted by a law or by a constitutional belief. It was promoted by the ethos of the society. So, if the ethos of the society was not secular, no law, no constitutional provision would have ensured it. And I don't think the ethos of the society has changed, because I think the ethos of India and the Hindu ethos of India is actually very secular. It's very pluralistic. India is the third largest Islamic population in the world. And the Asia Pacific is the largest Muslim population in the world. And like it or not, there is a very deep perception that whether it's Hindu nationalism or whatever, there's just a little too much on the books that puts Prime Minister Modi in a position of being not just nationalistic but anti-Muslim. So my question to you, without defending the premises or lack of validity of the premises, what do you see India's role is going to be going forward in dealing with the issues of Islam globally? Look, I don't know if you know, there's a national organization of great influence and recognition weight in India called the Jamaat Ulema-e-Hind. They've just had their annual meeting and they have spoken up very clearly in favor of the changes which are
which are envisaged in Kashmir. I don't think. I mean, my first response to you would be, I would not agree that the Kashmir issue should be seen through a communal lens. Okay. My second observation would be that if you look today at the changes in India, probably the word which captures it best for me is, India is modernizing in a very interesting way, and it's not necessarily state driven. Okay. I mean, to me, anything the state does is overshadowed by what the smartphone does. I mean, if you look today, the moment people have money, the first thing they do, I mean, when I had money, I first dreamt of buying a car. Someone today who's 16, 17, 18 would think of getting a phone and improving the phone. So, you are seeing a more urbanizing society. In that sense, society which is interestingly more meritocratic. It is the social gains are spreading, but at the same time, it's also mixing up. There's a lot of internal mobility which wasn't there before. So I would actually predict to you that you would have a society increasingly where traditional identities matter less than they did in the past. In terms of, how do we approach the Indian state or the political party, the ruling political party? Look, today, if there's one area where we can boast of visibly good relations, particularly in the last 5 years, that would be the Gulf. And the dominant faith in the Gulf. I think they see it because there is an objectivity about them and a sort of they don't have vested interest in what is essentially an Indian domestic discourse. So I would not be comfortable with the view that somewhere we are headed for some kind of collision with the Muslim community globally. I don't think that is the case. I think, Diana, if you'll forgive me, we have to bring the session to a close. I want to thank everyone for coming and being part of this tonight. Minister, and particularly to thank you. You've given us a sense of the structure of India's foreign policy to which this country is privileged to relate and will have to relate in the years ahead, and you've given us some very sharp insight. So friends, very interesting video, क्योंकि जनरली मीडिया ने इतना उस टाइप से फैला दिया है कि कोई बाहर वाला जो है उसको यही लगता है कि जो मोदी हैं वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट हैं या वो उसको इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हर जगह यही सुनने को मिलता है क्योंकि मीडिया ऐसी बातें कर देता है जो एंटी गवर्नमेंट है, वो ऐसी बातें फैलाते हैं जिसकी कोई मतलब ट्रुथ है ही नहीं उस बात में। तो बहुत अच्छा जयशंकर जी ने बताया, उन्होंने कहा कि भाई बेस्ट, उन्होंने जो मुझे बात लगी उसमें बहुत अच्छा बोला था, पर जो बहुत मतलब उस टाइम उन्होंने इतना अच्छा फैक्ट दिया कि उन्होंने कहा भैया गल्फ कंट्री से तुम देखो कि हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं आज 5 साल के अंदर सबसे ज्यादा इंप्रूव कहाँ हुए, वहां हुए हैं, और उनका फेथ क्या है। तो इससे आपको साफ पता चल रहा है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। जिनका फेथ में जो आप मुस्लिम्स कह रहे हो वो कंट्रीज हमारे साथ इतनी अच्छी रिलेशनशिप्स उनके साथ हो रही हैं, हमारी इन 5 सालों में हुई हैं। तो इससे बड़ा आपको और क्या फैक्ट मिल सकता है कि जो आप बोल रहे हो कि भैया एंटी मुस्लिम्स होने वाले हैं या वर्ल्ड के मुस्लिम्स के अगेंस्ट खड़े होंगे हम, या पता नहीं क्या। मैं तो हैरान हो रही थी ये सुन के। तो दैट इज कोई उसमें मतलब ट्रुथ है ही नहीं। तो काफी अच्छा उन्होंने आंसर किया था। पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा था कि लोग डिसाइड करते हैं कंट्री में क्या होगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी डिसाइड नहीं कर रहे कंट्री में क्या होगा, लोग डिसाइड करते हैं कंट्री में क्या होगा। कौन से लोग? लोग वो नहीं जो सिटीज में बैठे हैं, जो लोग सिटीज के बाहर हैं, जो कंफर्टेबल हैं अपनी मातृभाषा बोलने में, अपना इंडिपेंडेंट थॉट करने में, वो डिसाइड कर रहे हैं कौन सी पार्टी जीतेगी और क्या
पार्टी को करना चाहिए जो लोग चाहते हैं। मतलब पहली बात तो ने क्लियर की कि ये कोई किसी बंदे का रूल नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पे जो बंदा पावर पे आता है लोगों की वजह से पावर पे आता है, वही होगा जो मेजॉरिटी ऑफ लोग चाहते हैं अपनी कंट्री में। फिर उन्होंने कहा कि सेक्युलरिज्म कोई लॉ नहीं है जो बुक्स में लिखा हो कि हर बंदे को बोलते हैं भाई लॉ है तुम्हें फॉलो करना है। वो सोसाइटी ने डिसाइड किया है कि आपको फ्रीडम है, आपको जो रिलीजन करना है करिए, और अल्टीमेटली लॉ नहीं डिसाइड करता। अब सोसाइटी मॉडर्नाइज हो रही है, जिसके पास पैसा आता है उसको पहले ये है कि हम अपना स्मार्टफोन ले लूं, स्मार्टफोन को बढ़िया कर लूं, हायर खरीद लूं, गाड़ियां खरीद लूं। उसे ये नहीं है कि भैया तू हिंदू है, तू दूसरे रिलीजन का है, दूसरे, उसको उससे कुछ नहीं है। उसको है कि लाइफ मॉडर्न तरीके से जीने के लिए। तो वही कह रहे कि जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, और ये नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला मॉडर्नाइज जैसे जैसे कंट्री होगी, जैसे जैसे लोगों को बेनिफिट आएगा मॉडर्नाइजेशन का, पैसा आएगा लोगों के पास, तो उनको सिर्फ ये होगा कि हमें ग्रो करना है, ये नहीं कि भाई अगले का रिलीजन क्या है वो है। तो उनके हिसाब से कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने वाला, हिंदू और मुसलमान में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। मॉडर्न कंट्री बनेगी और मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ेगी, लोग डिसाइड करेंगे कहाँ उनको जाना है या क्या पॉलिसी होनी चाहिए। तो काफी अच्छा था। यस फ्रेंड, तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।